Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 34th. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The chapter is word formation or etymology, and the topic is borrowing. Before borrowing, we discussed coinage. That was in lecture number 33rd. This lecture is specifically for the students of BS second semester GDCPIB and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. We will do this topic from the study of language by Giorgio, and page number is 54. Borrowing in simple English, this word is used. Borrowing, for example, you borrow something or you borrow money from someone. The opposite is lend. When you borrow, you take it. When you lend, you give it. So this is taking. We will discuss it, borrowing of words, of course, under three different headings. The first one is borrowing from other languages into English. The next is that some other languages have borrowed words from English, so from English into other languages. And the last in this will be calc, which is a special type of borrowing, also called loan translation or calc. So we will discuss it under these three subheadings. Borrowing. This is the most common source of new words in English, because a lot of words have been borrowed from other languages into English. So unlike coinage, which is less common, this is the most common source of new words in English, and this process is simply known as borrowing. It means taking over of words from other languages. For example, we have this word croissant. It is a kind of bakery. We have a dope. In games, you might have heard this word dope, which is a Dutch word. It is borrowed from Dutch language, and it means drug. Lilac, it is taken from Persian. Piano is from Italian. Pretzel, which means biscuit, is from German. Sofa is from Arabic. Now this might look quite strange to you, that the word sofa is derived from Arabic, borrowed from Arabic. If you have heard the name of Sofa, Ashab Sofa, so it is from that sofa word has been derived. Tetu is a Tahitian language. Tahitian is the name of an island. Tycoon, which means a wealthy person in business, is borrowed from Japanese. Yogurt is from Turkish, and zebra is from Bantu. It is an African place. So these were the words which were borrowed by English from other languages, but other languages have also taken or borrowed words from English. For example, Japanese say supermarketo. This is actually taken from English, which is supermarket. And then English word is typewriter, and they have taken this typewriter and they use it in Japanese language as typewriter, which is a borrowing from English, typewriter. Then we have Hungarian words for sport, derived from English. Club, football, all these are borrowing into Hungarian from English. So English has lent these words to these countries. Then we have French words, for example, la stress. La means the in French.
La whiskey. Whiskey is a kind of drink. The whiskey. La weekend, which means the weekend. And these weekend, whiskey and glass, stress, these are derived from or borrowed from English into French language. Then the last item in this discussion is calque, which is a special type of borrowing and is called loan translation. That is, the word is not borrowed, but its translation, it is first translated and then that translation is borrowed. For example, there is the French term gratte-ciel. This is the translation of scrape sky. Very high building is called skyscraper. Scrape sky. English exact word is skyscraper. A very tall building. There is then the Dutch word wolkenkrabber, which again is a reference to the skyscraper, a very high building. It means cloud scratcher. Or there is the German word, the Wolkenkratzer, the cloud scraper. So these are all the calques for the English skyscraper. That is, skyscraper is translated into Dutch and then used as borrowed as a word. The English was Superman, for example, is a loan translation of the German. The Germans say Übermensch, and this Übermensch is translated as Superman. So the term loan word, again in itself, is a kind of translation from German Loanwort. Loan word. Then we have the American concept of buy a friend. It was a borrowing with sound modification into Japanese. So the Japanese borrowed it from English with this word buy a friendo, but as a calque into Chinese as male friend, nanpengyu. Nanpengyu is a Chinese translation of boy or male friend, and this is that actual calque we are talking about. तो ये borrowing की बात तो इसको उर्दू में भी सुन लें. हम 3 हेडिंग्स सब हेडिंग्स में इसको पढ़ेंगे. borrowing का मतलब तो है कर्ज लेना, लेकिन कर्ज जब आप लेते हैं तो फिर देना भी पड़ता है. इंग्लिश कर्ज लेता है और ये कर्ज फिर वापस नहीं करता. और हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश से और लैंग्वेजेस ने भी बोरो किए हैं और एक ख़ास किस्म का लोन ट्रांसलेशन कैल्क कहलाता है. हम इसको भी डिस्कस करेंगे, तो इसको उर्दू में भी सुन लें. इसकी डेफिनेशन तो ये है, टेकिंग ओवर ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस से अल्फाज लेना. इसमें हमने मिसाल पढ़ी क्रोसा की, डोप की, लिलैक, पियानो, प्रिट्सल और सोफ़ा की. फिर हमने वो मिसालें पढ़ी जिनमें इंग्लिश से अल्फाज लिए गए हैं जापानीज़ में, मसलन सुपरमार्केट, टाइपराइटर. हंगेरियन ज़बान में स्पोर्ट क्लब, फुटबॉल लिया गया है इंग्लिश से. फ्रेंच ज़बान में स्ट्रेस, विस्की और वीकेंड के अल्फाज लिए गए हैं. कैल्क जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ बोरोइंग है. ये लोन ट्रांसलेशन यानी पहले ट्रांसलेट करके फिर उसको लिया जाता है. मसलन इंग्लिश में कोई लफ्ज़ है, उसको ट्रांसलेट करके फिर किसी लैंग्वेज ने ले लिया है, तो ये कैल्क कहलाता है. हम इसको पढ़ेंगे. As Bill Bryson observed in the quotation presented earlier, one of the most common, ये यहाँ तक आप छोड़ दें, ये चैप्टर के आगाज में हुआ है, हम इसको छोड़ते हैं. One of the most common sources of new words in English is the process simply labeled borrowing. एक जो मोस्ट कॉमन सोर्स है नए अल्फाज का, वो borrowing है.
that is the taking over of words from other languages. दूसरे languages से अल्फाज लेना. Technically it's more than just borrowing. ये borrowing exactly नहीं है, because English doesn't give them back, क्योंकि ये वापस नहीं देता. Throughout its history, the English language has adopted a vast number of words from other languages. दूसरे languages से English ने बहुत सारे अल्फाजों को borrow किया है, including croissant, जो French से borrowed है. बेकरी आइटम है, आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं. ये तकरीबन क्रीम रोल की तरह होता है, लेकिन क्रीम रोल्स के जो एंड है खुले होते हैं, इसके एंड्स बंद होते हैं. डोप ड्रग को कहते हैं, जिस तरह खेलों में डोप टेस्ट होता है. और इस तरीके से ये डच लफ्ज़ है. एक पर्शियन लफ्ज़ है, पियानो इटालियन, प्रेट्ज़ल, और सोफ़ा अरबिक लफ्ज़ है. ये सोफ़ा शायद आपको अजीब लगे अगर आपने लफ्ज़ सुफ़ा सुना हो, इस तरह असहाब सुफ़ा, तो ये वही लफ्ज़ सुफ़ा से सोफ़ा निकला है. टटू है, टाइकून है जापानीज़ लफ्ज़, और योगर्ट है, और ज़ीब्रा है. तो इंग्लिश से जो अल्फाज बारो किए गए हैं, अदर लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स बारो फ्रॉम इंग्लिश एज इन जापानीज़. दूसरे लैंग्वेजेस इंग्लिश से उन्होंने बारो किया है, जैसे जापानीज़ है, यूज़ ऑफ सुपा और सुपरमार्केट हो, सुपरमार्केट, एंड टाइपराइटर. हंगेरियंस ने टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट, क्लब एंड फुटबॉल. आप देख सकते हैं इनका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज, लेकिन ये हंगेरियन. द फ्रेंच डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ला स्ट्रेस और ए ग्लास ऑफ ला विस्की ड्यूरिंग वीकेंड. ला वीकेंड ये ला इद्दा को कहते हैं. द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस, विस्की और वीकेंड ये लिया गया है इंग्लिश से फ्रेंच में. कैल्क, a special type of borrowing is described as loan translation भी इसको कहते हैं, यानी ट्रांसलेट करके लफ्ज़ लेना, और कैल्क. In this process there is a direct translation of the elements of a word. इस प्रोसेस में डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिया जाता है into the borrowing language. borrowing language में interesting examples are French term gratte-ciel, ये French term है, which literally translates as scrape sky, आसमान को छूना, यानी बहुत ऊंचा बिल्डिंग. दी डच वॉल्कन क्रैबर, जिसका मतलब है क्लाउड स्क्रैचर, बादलों को छूना, और इसका मतलब भी वही होगा. और द जर्मन वॉल्कन क्रैचर, जिसका मतलब क्लाउड स्क्रैपर, बादलों को छूना. ऑल ऑफ विच वर कैल्क्स फॉर द इंग्लिश स्काई स्क्रैपर. ये स्काई स्क्रैपर के कैल्क्स हैं. The English word Superman is thought to be a loan translation of the German Übermensch. ये Übermensch से Superman है, and the term loan word itself is believed to have come from the German loan word. ये loan word से loan word translate हुआ है. The American concept of boyfriend was borrowing with the sound modification. ये borrowing की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैल्क की नहीं कर रहे हैं. इंटू जापानीज बॉयफ्रेंड में तो ये बारोइंग था, लेकिन इसको चाइनीज ने जो लिया तो उन्होंने ट्रांसलेट करके लिया, और ये कैल्क होगा. बट एज अ कैल्क इंटू चाइनीज एज मेल फ्रेंड और नैन पेंग्यू. सो दैट्स ऑल अबाउट borrowing. Thank you and good luck.